फ्रेंड्स, एसएफएम के अंदर जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, राइट। तो वो जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए के अंदर चैप्टर नंबर 4 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वो है सिक्योरिटाइजेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है सिक्योरिटाइजेशन के ऊपर एंड वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स, वेटेज हो सकता है अप टू 7 मार्क्स, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं हम, राइट। वो इसलिए एसएफएम के अंदर थ्योरी का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है एंड थ्योरी जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही आता है। तो ये जो चैप्टर है ये हेल्प करेगा टू सिक्योर एग्जामिनेशंस, राइट। तो क्या है सिक्योरिटाइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व इन सिक्योरिटाइजेशन, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, right, and which type of different type of issues faced by participants in securitization। तो वो all इसके ऊपर डिस्कस करेंगे अच्छे से। सिक्योरिटाइजेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है एंड हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन एंड सिक्योरिटाइजेशन के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो सब के ऊपर आज अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट the definition and concept of securitization. See, securitization in its widest sense implies every process that convert a business relation into a transaction. To be very specific, it refers to the sale of assets which generate cash flows from the institution that own them to another company, which is called as special purpose vehicle that has been specifically set up for the purpose, and the issuing of notes, preferably interest-bearing bonds, by this second company. These notes are backed by the cash flows from the original asset. तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो सिक्योरिटाइजेशन इज लाइक converting a bunch of small debts into a big investment product. Suppose, for example, imagine you have a bank and that has given out lots of loans, right? So instead of waiting for each borrower to repay, the bank bundles these loans together and sell part of this bundle to investors. And this way, the bank get its money back faster and investor also get a new way to earn money from the repayment. Simple. So, simple भाषा में अगर एग्जाम में आए what is the meaning of securitization, so you can write that securitization is like turning a bunch of small debts into a big investment products. Big investment products. Imagine you have a bank. Imagine you have a bank and that has given out lots of loans. So instead of waiting for each borrower to repay, the bank bundles these loans together and sells parts of this bundle to investors, and this way the bank
this way the bank gets its money back faster, right? And investors also get a new way to earn money from the repayment. सिंपल। तो इतना ही हमको लिखना है सिक्यूरिटाइजेशन का मीनिंग। सिक्यूरिटाइजेशन इज लाइक कन्वर्टिंग ए बंच ऑफ स्मॉल डेब्ट्स इनटू ए बिग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। सपोज अगर हमको एग्जाम्पल देना है तो लिख सकते हैं, इमेजिन यू हैव ए बैंक एंड दैट हैज गिवन आउट लॉट्स ऑफ लोन्स। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच बोरोवर टू रीपे, द बैंक bundles these loans together and sell part of this bundle to investors, and this way the bank gets its money back faster and investor also get a new way to earn money from the repayment। तो यहाँ पर दोनों को मतलब बेनिफिट मिल रहा है, एक तो इन्वेस्टर लोगों को एंड एक को बैंक को, राइट? तो इसलिए सिक्यूरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सिक्यूरिटाइजेशन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग टेक्निक employed by investment banks to enable bonds to be created from any type of cash flow, right? And the most typical such flow are those generated by high value loans such as residential mortgage and credit card loans, which are recorded as assets on bank or financial house balance sheet. So in securitization क्या होता है, the loan assets are packaged together and their interest payment are used to service the new bond issue. In addition to the more traditional cash flows from the mortgage and loan asset, investment banks are underwrite bonds secured with flows received by leisure and recreational facilities such as health clubs and other entities such as nursing homes, right? तो सिक्यूरिटाइजेशन को इतना कॉम्प्लिकेट में समझना नहीं है। सिक्यूरिटाइजेशन सिंपली एक टर्निंग मतलब प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस के अंदर बॉन्च ऑफ स्मॉल डेब्ट को मतलब एक साथ बिग इन्वेस्टमेंट पे चेंज किया जाता है एंड थ्रू ए स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि एक स्पेसिफिक कंपनी है, जो कंपनी को बैंक ने क्रिएट किया है टू सेल दोज इन्वेस्टमेंट, राइट? तो सिक्यूरिटाइजेशन इज लाइक टर्निंग ए बंच ऑफ स्मॉल डेब्ट्स इनटू ए बिग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। एंड सपोज इमेजिन इफ you have a bank and that has given out lots of loans. Instead of waiting for each borrower to repay, the bank bundles these loans together and sell part of this bundle to investors. And this way, the bank gets its money back faster and investor also get a new way to earn money from the repayment. तो ये है securitization, right? And now, what are the key points of securitization? बुक्स के अंदर बहुत सारे लेंदी में लिखा गया है। सो हमको यहाँ पर जो की पॉइंट्स है वो की पॉइंट्स को ही ऐड करना है। जैसे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन, द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड सिक्यूरिटाइजेशन हैज बीन द नीड फॉर बैंक to realize value from the assets they hold on their balance sheet. Typically, these assets are residential mortgage, corporate loans, and retail loans such as credit card loans, etc. A financial institution securitize part of its balance sheet for three main reasons. क्या है main reason? First and most important, funding the asset that it owns. जो एसेट को ओन किया है वो एसेट को फंडिंग करना है। देन बैलेंस शीट कैपिटल मैनेजमेंट एंड देन रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर, राइट? तो ये है बेनिफिट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक वो है पार्टिसिपेंट्स इन सिक्यूरिटाइजेशन। कौन कौन सिक्यूरिटाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेंट होते हैं? एक तो ओरिजिनेटर, सेकेंड अरेंजर, थर्ड स्पेशल पर्पज व्हीकल, 4 इन्वेस्टर, 5 सर्विसर्स, 6 रेटिंग एजेंसीज, 7 एनहांसमेंट प्रोवाइडर्स एंड 8 रेगुलेटर्स। ये पार्टिसिपेंट है सिक्यूरिटाइजेशन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन श्योरली आ सकता है, राइट? पार्टिसिपेंट इन सिक्यूरिटाइजेशन। सो लेट्स राइट इन शॉर्ट हु आर द पार्टिसिपेंट इन सिक्यूरिटाइजेशन। लेट्स राइट पार्टिसिपेंट और की पॉइंट्स। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ओरिजिनेटर, राइट? ओरिजिनेटर कौन होते हैं?
See, an originator actually creates a securitized asset. The entity originates or owns the defined or identifiable cash flow that is an income stream from receivables. An example of an originator with assets that can be securitized is a retail bank which may securitize mortgage, ऑटोमोबाइल लोन्स, क्रेडिट कार्ड, रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल एक्सेट्रा. तो ओरिजिनेटर कौन है? इन सिंपल भाषा में द बैंक. ओरिजिनेटर मीन्स द बैंक or company that has the loans or debt, that has the loans or debts. तो ओरिजिनेटर लोग कौन होते हैं? द बैंक और कंपनी दैट हैज द लोन्स और डेब्ट्स. ये है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन या फिर पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटाइजेशन. सेकेंड, पूलिंग. अच्छा, पूलिंग मीन्स क्या है? सी, पूलिंग मीन्स combining many loans or debt into one big group. Combining many loans or debts into one big group. So let's write. Pooling means combining many loans or debts into one big group या फिर bonds, group और bonds, whatever the name called. सो ओरिजिनेटर कौन होते हैं? द बैंक और कंपनी दैट हैज द लोन्स और डेब्ट. एंड पूलिंग का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग मेनी लोन्स और डेब्ट्स इनटू वन बिग ग्रुप और बॉन्ड्स. देन द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल. स्पेशल पर्पज व्हीकल. अब ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या है? जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं SPL. See, special purpose vehicle is the most important part of securitization. कैसे? This is an entity which is established by the originator to specifically purchase the assets and realize their off-balance sheet treatment for legal and accounting purpose. This is generally established in form of a trust or a company and is, as far as legally possible, bankruptcy removed from the originator, and the newly incorporated SPV, also called the issuer, issues security to investors to fund the purchase of the isolated receivables from the originator. Means special purpose vehicle क्या है? See, special purpose vehicle simply कहा जाए तो ये special purpose vehicle एक कंपनी है जिस कंपनी को बैंक ने क्रिएट किया है टू इन्वेस्ट दोज लोन्स व्हिच एक्वायर्ड बाई बैंक जो लोन्स को मतलब इकट्ठा किया है, राइट, वो लोन को स्पेशल पर्पज व्हीकल के थ्रू. मीन्स स्पेशल पर्पज व्हीकल एक कंपनी है जो वो मतलब डेब्ट जो लोन्स वगैरह है वो लोन्स को इन्वेस्ट करता है टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, राइट. तो स्पेशल पर्पज व्हीकल सिंपल भाषा में कहा जाए तो ए न्यू कंपनी व्हिच इज क्रिएटेड जस्ट टू हैंडल दिस बिग ग्रुप ऑफ लोन्स एंड द बैंक सेल्स द लोन टू द SPV. बैंक क्या करता है? वो लोन को SPV को सेल करता है एंड देन SPV क्या करता है? SPL क्या करता है? सब्सिक्वेंटली SPL ऑल्सो सेल दोज लोन्स टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, राइट. तो ये एक चेन रूल होता है. तो स्पेशल पर्पज व्हीकल इन सिंपल भाषा में ए न्यू कंपनी created just to handle this big group of loans and the bank sells the loans to the SPV, right. तो ये है स्पेशल पर्पज व्हीकल. देन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व इज ट्रांस. अब ये क्या है? ये जो वर्ड है ये सुनने को थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है. ट्रांस, एक्चुअली ट्रांस मीन्स द बिग ग्रुप ऑफ लोन्स व्हिच इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीस, right. So trans means the big group of loans which is divided into smaller piece and
each with different level of risk and return. Some P's are safer but pay less, while others are riskier but pay more. That is called trans. Right? तो trans का मीनिंग लिखना है सिंपल भाषा में. Trans means the big group of loans is divided into smaller pieces and each with different levels of risk and return. Some pieces are safer but pay less, and while others are riskier but pay more. Simple. So trans क्या है? Trans means the big group of loans is divided into smaller pieces and each with different levels of risk and return. Some pieces are safer but pay less, while others are riskier but pay more. सिंपल. तो ये है ट्रांस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्यूरिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर. तो सिक्यूरिटाइजेशन के अंदर ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स जो की पॉइंट्स है ये ही इंपॉर्टेंट है. ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को फॉलो करना होता है सिक्यूरिटाइजेशन के अंदर. फर्स्ट ओरिजिनेटर, देन पूलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेब्ट्स, देन send those loans to special purpose vehicle to sell again to different investors. Then trans means the big group of loans which is divided into smaller pieces and each with different level of risk and return, and some pieces are safer but pay less, while others are riskier but pay more. तो ये सब की पॉइंट्स है, ये सबको लिखना है अच्छे से. बुक्स के अंदर क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी दिया है, तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके इसको मतलब एक्सपेंड कर रहा हूँ. राइट. देन क्रेडिट एनहेंसमेंट. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, क्रेडिट एनहेंसमेंट. राइट. जो बुक के अंदर लिखा गया है क्रेडिट एनहेंसमेंट, क्या लिखा गया है बुक्स के अंदर? क्रेडिट एनहेंसमेंट प्रोवाइडर्स, they provides credit enhancement to the asset-backed securities, and credit enhancement is used to improve the liquidity, marketability, appeal, and safety of the underlying cash flows, interest, and principal of a new instrument in the capital market. And this enhancement is provided internally by underwriters or dealers that agree to buy the entire subordinated tranche, or banks or insurers that provide unconditional guarantees which the SPV can draw if debtors default. Right. तो सिंपल भाषा में समझा जाए तो क्रेडिट एनहांसमेंट मीन्स व्हाट? मीन्स मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेफर by adding guarantee or extra protection. So let's write credit enhancements. Credit enhancement क्या है? Let's write making these investments products safer by adding guarantee or extra protections. तो ये है क्रेडिट एनहांसमेंट. क्रेडिट एनहांसमेंट मीन्स मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेफर बाय एडिंग गारंटी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शंस. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट एनहांसमेंट. राइट. तो ये सब की पॉइंट्स है, याद रखना है. की पॉइंट्स फर्स्ट एंड नंबर 1 ओरिजिनेटर, देन पूलिंग, देन स्पेशल पर्पस व्हीकल, देन ट्रांस and then credit enhancement.
राइट। 5 की पॉइंट्स यहाँ पर बुक्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट दिया गया है, जैसे कि ओरिजिनेटर, देन अरेंजर होना चाहिए, देन स्पेशल पर्पस व्हीकल होना चाहिए, देन इन्वेस्टर्स लोग होते हैं। इन्वेस्टर्स मीन्स इन ए सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस टाइपिकली financial institutions, insurance companies, pension funds, hedge funds, companies, high net worth individuals are the investors. And those investors purchase the securities issued by the SPV according to their risk return preferences. Servicers कौन होते हैं? SPV appoints the servicer to administer and collect the underlying receivables in the capacity of SPV's agent for a servicing fee stipulated under the servicing agreement. Then rating agencies लोग कौन होते हैं? Rating agencies rate the securities to indicate whether the SPV has a strong or weak capacity to pay interest and principal. A rating agency is one type of means indicator that shows whether the SPV has a strong or weak capacity to pay interest and principal. They act as the ultimate appraiser of the underlying pool of collateral. Then enhancement providers, they provide credit enhancement to the asset-backed securities. Credit enhancement is used to improve the liquidity, marketability, appeal, and safety of the underlying cash flows. This enhancement is provided internally by underwriters or dealers that agree to buy the entire subordinated tranche, or banks or insurers that provide unconditional guarantees which the SPV can draw if debtor default. राइट तो ये सब होते हैं पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटाइजेशन। मैंने यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, जैसे कि ओरिजिनेटर, देन पूलिंग, देन स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंड देन ट्रांस एंड देन क्रेडिट एनहेंसमेंट, 5 की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व किया हूँ। राइट, शॉर्ट नोट्स टाइप प्रिपेयर किया हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर। राइट, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स। राइट, बेनिफिट्स, लेट्स राइट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सी बुक्स के अंदर मैकेनिज्म एंड प्रोग्राम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन दिया गया है। यहाँ पर एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर देखो, सी मैंने जो जो लिखा है, स्टेप्स कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। द ओरिजिनेटर सिलेक्ट द रिसीवेबल्स टू बी असाइन्ड, then a special purpose entity is to be formed, then the special purpose company acquires the receivables, then the special purpose vehicle issues securities which are publicly offered or privately placed, then the securities offered by the SPV are structured usually class A, B and C, that is senior, mezzanine and junior, and the ratings are driven by the size of credit support, which is in turn driven by the expected loss from the pool, which are driven by the inherent risk of default in the pool. Then servicer for the transaction is appointed and is normally originator. तो ये सब प्रोसेस है जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हूँ। राइट, देन आता है प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो प्रॉब्लम्स से पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लेते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। राइट, बुक्स के अंदर बेनिफिट्स के बारे में इतने कुछ दिया गया नहीं है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। राइट, तो बेनिफिट क्या है? सी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क ट्रांसफर हो रहा है। रिस्क ट्रांसफर कैसे? रिस्क ट्रांसफर मीन्स द बैंक ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द लोन्स टू द इन्वेस्टर्स। बैंक जो होता है वो लोन्स को ट्रांसफर करता है टू द इन्वेस्टर्स। कैसे? थ्रू एसपीएल। एसपीएल मीन्स स्पेशल पर्पज व्हीकल। राइट, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ट्रांसफर्स। अगर एक्सपेंशन करना है तो 1 या 2 सेंटेंस पे लिख सकते हैं। द बैंक ट्रांसफर्स द रिस्क ऑफ द लोन्स टू द इन्वेस्टर। बस सिंपल इतना ही लिखना है, टू द इन्वेस्टर्स। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ securitization is liquidity. अब सर लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी simply said the bank gets money right away instead of waiting for loan repayment. राइट, लिक्विडिटी का ब्यूटी ये है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर कि बैंक को जल्दी मतलब मनी रिपेमेंट इजीली मिल जाता है। राइट, तो लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटाइजेशन।
एक्सप्लेन करना है तो लिख सकते हैं द बैंक गेट्स मनी right away instead of waiting for loan repayment मतलब बैंक को जल्दी मनी राइट बैक मिल जाता है इन सिक्योरिटाइजेशन के प्रोसेस के अंदर rather than instead of waiting for loan repayment. तो ये एक ब्यूटी होता है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, राइट. देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल एनहेंसमेंट और यू कैन से कैपिटल एफिशिएंसी. क्या है कैपिटल एफिशिएंसी? सी द बैंक कैन यूज द मनी फ्रॉम सेलिंग द लोन्स टू गिव आउट मोर लोन्स और इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स. तो ऐसे ही कैपिटल एफिशिएंसी या फिर कैपिटल एनहेंसमेंट होता है. कैसे? द बैंक कैन यूज द मनी फ्रॉम सेलिंग द लोन्स टू गिव आउट मोर लोन्स और इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स, राइट. तो इसलिए बैंक को कोई भी मतलब इशू फेस नहीं करने को पड़ता है एंड ऑल्सो बैंक विल अल्टीमेटली इंक्रीज इट्स कैपिटल. सो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं कैपिटल एफिशिएंसी इन द सेंस द बैंक कैन use the money from selling the loans to give out more loans or invest in other things राइट. तो ये एक बेनिफिट्स होता है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर. तो ये जो सब पॉइंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. अगर बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन का क्वेश्चन आए तो ये सब पॉइंट्स लिखना है. देन आता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी होता है. इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे? इन्वेस्टर लोग जो होते हैं गेट न्यू वेज टू इन्वेस्ट एंड अर्न रिटर्न्स. यू कैन राइट इन्वेस्टर्स गेट न्यू वेज टू इन्वेस्ट एंड अर्न रिटर्न्स. तो ये होता है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट. तो these 4 benefits are very essential and very important, and you just need to remember all such key points in case of benefits of securitization. One is risk transfer, then liquidity, then आता है capital efficiency, and then investment opportunities, right. See, पूरे जो एंटायर सिक्योरिटाइजेशन का प्रोसेस है वो क्या है इजीली समझते हैं. इमेजिन ए बैंक, राइट. ए बैंक हैज गिवन आउट 100 होम लोन्स. सपोज ए बैंक हैज गिवन आउट 100 होम लोन्स, right? Then the bank combine all those 100 home loans into one big bundles. Then the bank create a new company that is called SPV to buy this bundle of loans. Simple. And then the SPV क्या जो होते हैं, the SPV sell part of this bundle to different investors, right? And investors also get payment as the homeowners repay their loans, right? तो दिस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन. सिक्योरिटाइजेशन के अंदर बैंक फास्ट क्या करता है, जितने भी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स है वो सब इकट्ठा करके वो एक बिग बंडल में कन्वर्ट करता है. देन बैंक क्रिएट्स ए न्यू कंपनी. बैंक एक न्यू कंपनी क्रिएट करता है जिसको कहते हैं एसपीवी, मीन्स स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो कि वो बाय करता है ऑल सॉर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ बंडल ऑफ लोन्स. देन एसपीवी जो है दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल, वो क्या करता है, सेल पार्ट ऑफ दिस बंडल टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स, एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो गेट पेमेंट एज द होम ओनर रीपे देयर लोन्स. एंड ये है तो सिक्योरिटाइजेशन
जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, सिंपल है, बैंक के लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर जो कि क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, या फिर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय सिक्योरिटाइजेशन, वो जो कि इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट। सो लेट्स राइट द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटाइजेशन, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन क्या है प्रॉब्लम। बुक्स के अंदर लिखा गया है, इन स्पाइट ऑफ इट्स वाइडली रिकॉग्नाइज्ड बेनिफिट्स सिक्योरिटाइजेशन हैज ए फ्यू लिमिटेशंस एज वेल। क्या क्या लिमिटेशन है। दो थियोरेटिकली द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटाइजिंग एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी लोअर देन कॉस्ट ऑफ मेन स्ट्रीम फंडिंग, एक्चुअली सिक्योरिटाइजेशन हैज प्रूव्ड टू बी ए कॉस्टली सोर्स। ये एक कॉस्टली सोर्स है, मोर स्पेसिफिकली इन एमर्जिंग मार्केट्स ड्यू टू द हायर प्रीमियम डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर एंड एडिशनल कॉस्ट ऑफ रेटिंग एंड लीगल फीस। तो सिंपल भाषा में सिक्योरिटाइजेशन के अंदर टू मच एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली सोर्स। ये जो प्रोसेस है इसमें मतलब बहुत सारा एक्सपेंसेस होता है, कॉस्टली सोर्स होता है, एंड देयर आर circumstances in which investors need to pay additional cost, right, in the form of rating and legal fees. Then second जो प्रॉब्लम फेस करता है सिक्योरिटाइजेशन वो है सेटिंग ऑफ एन SPV रिक्वायर्स हाई इनिशियल पेमेंट। ये भी वही मतलब पेमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, हेंस देयर इज ए सर्टेन मिनिमम इकोनॉमिक साइज बिलो व्हिच securitization is not cost effective. So second most important problem of securitization is high initial payment. आप अगर की पॉइंट भी मेंशन कर देते हो तो भी मार्क मिल जाएगा, हाई इनिशियल पेमेंट, हाई इनिशियल पेमेंट। देन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटाइजेशन इज securitization transfer the problem of asset liability mismatch to investors. The profile of the repayment of principal to investors in a pass-through transaction replicates the payback pattern of the assets. So simply कहा जाए तो problem of asset liability mismatch to investors. Problem of asset liability mismatch to investors. देन और एक पॉइंट लिख सकते हैं प्रॉब्लम के अंदर, सिक्योरिटाइजेशन रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड बाय रेगुलेटर्स देयर आर डिस्क्लोजर्स टू सर्विस, ट्रस्टी, रेटिंग एजेंसीज एंड इन सम सर्कमस्टेंसेस इवन टू इन्वेस्टर्स। सो इट रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर, of information, right, high level of disclosure of information. So these are the problems faced by securitization process: costly source, high initial payment, then problem of asset liability mismatch to investors, and then require high level of disclosure of information. तो these are the problems faced by securitization. तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आ सकता है, विथ वेटेज हो सकता है अप टू 6 मार्क्स का, राइट। सिर्फ 4 to 5 पॉइंट्स लिखने में भी मार्क मिल जाएगा। देन आते हैं सिक्योरिटाइजेशन के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशू बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन आर एज फॉलोज: पास थ्रू सर्टिफिकेट्स, पे थ्रू सर्टिफिकेट्स, देन स्टॉक सर्टिफिकेट, देन एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर्स, and then interest only certificate and principal only certificate. These are the instrument under securitization. ये भी important है, थोड़ा सा रीड करने से भी याद हो जाएगा, राइट। एंड इसमें और कुछ नहीं है, एंड सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स का, जैसे कि इन सिक्योरिटाइजेशन हु इज द इशू ऑफ सिक्योरिटीज, तो राइट आंसर होगा स्पेशल पर्पज व्हीकल। देन अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच गिव लोन्स इज नोन एज व्हाट, as we already discussed, ये हो सकता है originator. The most important point under securitization process, the bank or financial institution which give loan is known as originator.
Then the concept of securitization is associated with what? With debt market. Then under securitization process, dash are instrument which issued subsidiary company in respect of receivables of holding or parent company. तो ये हो जाएगा प्रिफर्ड स्टॉक सर्टिफिकेट. ये सब इंपॉर्टेंट है. अंडर सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस ओरिजिनल बोरोअर इज नोन एज व्हाट? obligor. Dash certificate under securitization have multiple maturity structure, that is pay through certificate, right? तो ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा 2 to 3 times रिवाइज करना है. Preferred stock certificate are issued by a subsidiary company against the trade debt and consumer receivables of its parent company. In dash payment are made to investor only from the interest earned from the asset securitized. तो राइट आंसर होगा interest only certificate. And dash is an entity established by the originator to specifically purchase the asset and realize their off balance sheet treatment for legal and accounting purpose. तो यहाँ पर राइट आंसर होगा SPV. SPV means special purpose vehicle. The dash are CDOs backed primarily by corporate bonds. तो ये हो जाएगा CBOs, राइट. तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है. एंड ये है सिक्यूरिटाइजेशन का एंटायर प्रोसेस जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है. सिक्यूरिटाइजेशन मीन्स सिक्यूरिटाइजेशन इज लाइक कन्वर्टिंग ए बंच ऑफ स्मॉल डेब्ट्स इनटू ए बिग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. एंड सपोज इमेजिन इफ यू हैव ए बैंक एंड दैट हैज गिवन आउट लॉट ऑफ लोन्स. सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर ईच बोरोअर टू रीपे, द बैंक बंडल्स these loans together and sell part of this bundle to investors. And this way, the bank get its money back faster, and investor also get a new way to earn money from the repayment, right? And what are the key points? First and most important, originator, the bank or company that has the loans or debts. Then pooling means combining many loans or debts into a one big group or bonds. देन होता है स्पेशल पर्पज व्हीकल. सो स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ ए न्यू कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय द बैंक जस्ट टू हैंडल दिस बिग ग्रुप ऑफ लोन्स. द बैंक सेल्स ऑल दोज लोन्स टू द स्पेशल पर्पज व्हीकल. देन आता है ट्रांस मीन्स द बिग ग्रुप ऑफ लोन्स इज डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पीस एंड ईच विद डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. सम पीस आर सेफर बट पे लेस while others are riskier but pay more. Then आता है क्रेडिट एनहांसमेंट. तो क्रेडिट एनहांसमेंट मीन्स मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट सेफर बाय एडिंग गारंटी और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. ये है की पॉइंट्स ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन. देन आता है बेनिफिट्स. सिक्यूरिटाइजेशन से क्या बेनिफिट मिलता है बैंक को? एक तो रिस्क ट्रांसफर होता है, द बैंक ट्रांसफर द रिस्क ऑफ द लोन्स टू द इन्वेस्टर्स. देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन इज लिक्विडिटी. द बैंक गेट्स मनी राइट अवे इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लोन रिपेमेंट. बैंक को जल्दी ईयरली मनी बैक मिल जाता है इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लॉन्ग रीपेमेंट. देन कैपिटल एफिशिएंसी. द बैंक कैन यूज द मनी फ्रॉम सेलिंग द लोन्स टू गिव आउट मोर लोन्स और इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स. देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ securitization is investment opportunities. Investors get new way to invest and earn returns, right? And also the different type of limitations of securitizations मैंने मेंशन किया हूँ, जैसे कि कॉस्टली सोर्स, इसमें खर्चा बहुत होता है, टू मच एक्सपेंसिव एंड हाई इनिशियल पेमेंट, इनिशियली हाई पेमेंट पे करने को पड़ता है. देन प्रॉब्लम ऑफ एसेट लायबिलिटी मिसमैच टू इन्वेस्टर्स, राइट. एसेट लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी कभी मिसमैच हो सकता है टू इन्वेस्टर्स, राइट. देन रिक्वायर हाई लेवल ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो दीज आर द प्रॉब्लम ऑफ सिक्यूरिटाइजेशन. तो दिस इज इट ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4 सिक्यूरिटाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में इसमें एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, राइट. सो this is it all about securitization. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying.